the camera won't be able to start for this session, but I will just request you all to give your complete attention to the topic, because the topic which is there today for you all is something which is very important, and this is the crucial time going on to discuss this topic. What is my objective behind taking this topic? It's very simple. We are going to talk about understanding examination anxiety. What are the signs, symptoms, and what are the remedies to handle that? So, you may have a lot of questions, and believe me, when the board exam starts, there are a lot of cases which comes to school level, and many a times a principal or an academic head or the teacher, they find themselves not being able to handle such issues. What they say at last is that the child is not prepared, and that's why the child is behaving like this. But let me add this to your knowledge, that this session is going to give you a very comprehensive knowledge about what is examination anxiety and how सर आपने म्यूट किया है. apologies, yeah, ये म्यूट हो गया था. Is it audible? यस सर ऑडिबल है. Okay. So I'm going to discuss with you some tips and techniques how examination anxiety appears, what are the signs and symptoms of examination anxiety, and what remedies can be used. But before I talk about this, there are few questions which generally come to everyone's mind is, what is anxiety? What is stress? What is tension? What is worry? And these are all four different stages. So, कभी भी आप इन चीजों को मिक्स ना करें कि एंजाइटी का मतलब क्या हो रहा है, बच्चा एग्जामिनेशन एंजाइटी फेस कर रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे. मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं so that you have a very clear clarity about it, that जब किसी बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स दिखें तो आप उसको कुछ फर्स्ट एड दे करके बैलेंस करने की कोशिश करें. बिकॉज for us, standing every year and doing an invigilation duty or a frisking duty is a very left hand job sort of thing. But for someone who is appearing for the board for the very first time is something which is very challenging. So we need to understand the difference between how examination anxiety can be effectively handled and what we can do to handle that. So I'm talking about understanding examination anxiety. So let us start with, या शुभाशीष सर, मुझे बस इतना बताइए, जैसे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं तो आपको स्लाइड चेंज होती दिख रही है ना? यस सर. It is introduction written on your slide as well, यस right? सर. Fine. So I'm just going to address what is examination anxiety and बच्चों के academic performance, उनके mental well-being के साथ साथ आप as an educator कितना important role play करते हैं और आप उसको कैसे effectively manage करने में help कर सकते हैं, we'll be focusing on that. So if I talk about anxiety, so anxiety is something which is a very normal emotional response. What is normal emotional response? जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं, या आप एवरेज पढ़े लिखे हैं, या आप कम पढ़े लिखे हैं,
तीनों सिचुएशन में यदि मैं आपसे ये कहूं कि कल आपका एग्जाम है, तो ये सुनते ही आपको एक एंजाइटी फील होगी, अरे यार कैसा एग्जाम। प्रॉब्लम एग्जाम से नहीं है, प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के साथ अटैच्ड इमोशनल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट से है. So we feel anxious. So somewhere try to understand that anxiety is a very normal emotional response. Now, stress is something which is a part of everyone's life, which is a part of everyone's life. How it affects, how it is used, how it works. So this is something, जब आपके घर में आपके सिस्टर की शादी है और आप 3 दिन से परेशान हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप खुश हैं, दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस. और आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, यू हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, यू हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम एंड दैट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन, दैट इज डिस्ट्रेस. सो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के केसेस में वो किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखने लगते हैं, जिसको हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में थिंकिंग एरर कहते हैं, यानी थॉट्स के लेवल पर कुछ त्रुटियां करना, कुछ गलतियां करना. सो यदि किसी के स्ट्रेस का लेवल, the only person who is without stress is a person who is there in the Shamshan Ghat. So till the time your life is in progress, you have to understand that stress will be a part of life, whether it is in a form of eustress or it will be a distress, but stress will be there. So let us talk about stress. The very simple thing is that stress is a natural response to demands or challenges. And stress can be two types, whether it is acute or it can be long term chronic. What is anxiety? So, anxiety includes, the symptoms of stress is physical, emotional, and cognitive responses to pressure or change. When we talk about anxiety, so anxiety means persistent restlessness, muscle tension, and cognitive distress. What is cognitive distress? Cognitive word सुनने में बड़ा heavy लगता है, but cognition का simple सा मतलब है your thinking, understanding, comprehension, analyzing. इसी process को हम लोग psychology में cognition कहते हैं. तो cognitive distress का मतलब हुआ जब हमें कोई चीज थॉट्स के लेवल पर बहुत परेशान कर रही हो, या हमारे एनालिटिकल माइंड को बहुत परेशान कर रही हो, थिंकिंग के लेवल पे बहुत परेशान कर रही हो. सो परसिस्टेंट रेस्टलेसनेस, यानी जब व्यक्ति की बेचैनी लगातार मेंटेन रहे, मसल टेंशन, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, एक पेट में अजीब सी सिकुड़न सी महसूस हो रही है, नर्वसनेस में लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, ये कुछ कॉमन साइंस दिखते हैं जहां पे हम लोग इसको पैरासिटामोल का ऑप्शन दे करके या इंट्रोकोनॉल का ऑप्शन दे करके मैनेज करने को सोचते हैं. बट लेट मी टेल यू, कई बार बहुत अच्छे से काम डाउन हो करके सिर्फ बात करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाती हैं. बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बहुत इफेक्टिवली डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें कहीं भी कोई सच कंसर्न नहीं आता. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Anxiety is what? Anxiety is, in a very simple word, it is excessive worry or fear about future events. Future events of what? Like the child may feel, I will get failed, my parents will feel ashamed, my parents will feel bad about it, what other people will say, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, फिर मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर जीवन में अच्छा जो है इवेंट कोई और एड ऑन नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स बड़े निराश हो जाएंगे, यानी इस तरीके के ओवर थिंकिंग की एक चेन चलने लगती है. सो दिस इज समथिंग विच इज एंजाइटी. ड्यूरेशन, इट कैन बी क्रॉनिक और एपिसोडिक. क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत सीवियर लेवल पे. एपिसोडिक का मतलब थोड़े एपिसोड के लिए, किसी क्षण मात्र के लिए, या मान लीजिए मैथ्स में ही बहुत टेंशन है तो मैथ्स की उससे पहले हो गई. लोग बड़ा कॉमनली मिक्स कर देते हैं, आई एम डिप्रेस्ड. भाई, you are not depressed. Why? Because the very simple thing is, depression is a clinical situation.
You may be sad, you may be feeling bad about something, बट चूंकि आजकल का जमाना हो गया है कि हम लोग बहुत सारे फैंसी वर्ड्स यूज करने लगे हैं, तो पीपल एंड अप सेइंग आई एम डिप्रेस्ड. So, what are the symptoms of depression? Persistent low mood, चेंजेस इन एपेटाइट, खाने पीने में चेंज हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, और लगातार ये फीलिंग का बहुत दिनों तक मेंटेन रहना, आई एम गुड फॉर नथिंग, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस. So this is what is the symptom of depression in a nutshell. Uh, it is something related to mood disorder characterized by persistent sadness and lack of interest. क्या ड्यूरेशन होता है? कम से कम 2 हफ्ते. यदि कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो इस सिचुएशन में. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ इज, इट इज टेंशन. Tension is mental or emotional strain, often due to stress or conflict. मन में कोई द्वंद चल रहा है, मन परेशान है किसी चीज से, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है. उस सस्टेन स्टेट को जहां पर हम इमोशनली एक तरीके का स्ट्रेन फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंशन. इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है? इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है. इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? मसल स्टिफनेस, पैर की नसें बार बार चढ़ जा रही हैं, बार बार हाथ की नसें स्टिफ हो जा रही हैं, लगातार सिर दर्द बना हुआ है, या इमोशनल लेवल पे बार बार बच्चा जो है वो बहुत टेंस्ड दिखाई दे रहा है, चेहरे पे लगातार एक फॉल्स हंसी कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहा है, बट वो मैनेज नहीं हो पा रही है. सो दिस इज व्हाट टेंशन इज. Now you can easily understand what is stress, anxiety, depression, and tension. Coming to types of anxiety. So if we talk about types of anxiety, there are multiple tests which tells that किस type की anxiety है. एक तो एग्जाम स्पेसिफिक होती है, जैसे कि कोई टेस्ट आ गया, कोई एग्जाम आ गया, अब उस सिचुएशन में मुझे जो है एंजाइटी हो गई, और वो उस पीरियड के बाद जब एग्जाम दे लिया तो एंजाइटी खत्म हो गई. सो दैट इज वन टाइप ऑफ एन एंजाइटी. दूसरी होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज के साथ मुझे एंजाइटी हो रही है जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड चल रही है, एक लंबे समय तक खिंच रही है, बट वो मेंटेन्ड है. सो एंजाइटी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अब ये सिम्टम्स आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई बच्चा आपको कभी ऐसा दिखाई दे, चाहे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, चाहे स्कूल एग्जाम के टाइम पे, चाहे यूनिट टेस्ट के टाइम पे, आप उसको इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं. आपको फिजिकल सिम्टम्स क्या ध्यान रखने हैं? तो एंजाइटी के बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं. यदि बच्चे को कोई सीवियर क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, यदि बच्चे को कोई सीवियर क्लिनिकल इशू नहीं है, कोई फिजिकल हेल्थ कंसर्न नहीं है, उस सिचुएशन में यदि बच्चा बहुत हाई इंक्रीज्ड हार्ट रेट बता रहा है, तो कहीं ना कहीं समझना है. जैसे इमोशंस के लेवल पर हम जब किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इमोशन के लेवल पर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इमेजिन करने लगते हैं, फील करने लगते हैं फॉर फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो हमको उस चीज से एंजाइटी होने लगती है. और उस एंजाइटी में होता क्या है? हार्ट रेट का बढ़ जाना. हार्ट रेट, दिल जो है वो 72 की जगह 140 की स्पीड से धड़क रहा है, और बहुत तेजी से घबराहट हो रही है, नोजिया और स्टमक डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग की फीलिंग आना, ऐसा लगना कि अब उल्टी हो जाएगी, या पेट में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट, बहुत खिंचाव हो रहा है, बार बार उल्टी जैसा जी कर रहा है, नोजियाटिक फीलिंग हो रहा है, ठीक है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, पेट में एक अजीब सी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो एनी डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू स्टमक, इफ इट इज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम और स्कूल आवर में बच्चा कहता है, तो थोड़ा देर उससे बैठ के बात करने से बहुत सारी चीजें सेटल हो सकती हैं. और ऐसा देखा जाता है कि एंजाइटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या हो सकता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम में सबसे सिंपल जो चीज होती है वो
जैसे कि उसको अजीब सी खट्टी डकारें आने लग रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट में हैवीनेस फील हो रहा है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, लूज मोशन हो रहा है, या एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो गया है। हेडेक, हेडेक इज समथिंग जो बहुत कॉमन फिजिकल सिम्टम है किसी भी प्रकार के इमोशनल डिस्कम्फर्ट का। अरे आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, द मोमेंट समबडी सेज, तो हमारा पहला क्वेश्चन उससे होता है क्यों, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, इज देयर एवरीथिंग फाइन। सो हेडेक इज समथिंग which is a very common symptom of anxiety as well, and it's a very common physical symptom. Sweating, हाथ में स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा माथे पर पसीना आना, ठीक है, ये बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होना, it is also a sign and an indicator of anxiety, that the person is very anxious and going through some sufferings and all. Trembling, trembling is something, when you're just trembling or shaking your legs or like shaking your any body part continuously while talking, maybe टक 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 की आवाज करना, पैर हिलाते रहना, या किसी तरीके के ऐसे बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट को किसी पर्टिकुलर फिजिकल जेस्चर से इंडिकेट करना. So these are some physical symptoms which you can observe, एंड दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू आई विल टेल यू लेटर, बट आपको यदि कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको बहुत सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि ये एंजाइटी का भी साइन हो सकता है. मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट, बट जब आपको सिम्टम पता होगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पैनिक जब होते हैं तो हम दूसरे को पैनिक कर देते हैं और अपनी एंजाइटी उसको स्विच करके खुद रिलैक्स हो जाते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू डोंट गेट पैनिक and the child also do not get panic. What are the psychological symptoms which comes when the examination anxiety take place? So very first common psychological symptom is fear of failure. नाउ बच्चे से यदि आप बात करें कि बेटा क्या फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको फेल होने का डर लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, इस तरीके की एक दो क्वेश्चंस जहां आपने पूछा और बच्चे ने यदि हामी भरी, तो आप समझिए कि जो फिजिकल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसके साइकोलॉजिकल रीजन को आपने टच कर लिया है. दूसरा, निगेटिव सेल्फ टॉक. आप उससे बहुत सिंपली पूछ सकते हैं, अच्छा आजकल तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, जब से एग्जाम की बात आई है या जब से ये पेपर पर्टिकुलर की बात आ रही है, ठीक है, इसका शब्द सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चलने लगती हैं. डू नॉट इंटरप्ट, जस्ट लिसन. द चाइल्ड विल टेल यू, मुझे ऐसे सर मुझे बहुत खराब फील होता है, जैसे मैं सुनता हूँ मुझे लगता है आप कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, फिर पापा बहुत दुखी होंगे, मम्मी बहुत दुखी होंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एंड इफ यू फाइंड कि नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है, इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी. इरिटेबिलिटी, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, पेरेंट्स आए कहे पता नहीं इसको कुछ भी कह देते हैं एकदम भड़क जाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, पहले बड़ा अच्छे से बात करता था, बड़ा बैलेंस्ड रहता था, चीजों को समझता था, सुनता था, अब तो हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है. क्लासरूम में दूसरे टीचर भी कह रहे हैं अरे उस बच्चे को रोज का रोज वो बहुत बदतमीज होता जा रहा है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जा रहा है, या दो चार बच्चे आपको आकर के कह रहे हैं कि सर वो गाली देने लगा है, पहले तो बड़ा शांत रहता था. This is also a sign of psychological discomfort. So have to understand this as well. Difficulty concentrating. यदि आपके पास बच्चे इस प्रॉब्लम से आ रहे हैं, एग्जाम पास आ गया है, अब हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी मेमोरी गड़बड़ है, मुझे लग रहा है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उसको कहिए बेटा यदि तुम्हारे आईक्यू में कोई दिक्कत होती, तुम्हें मेमोरी की प्रॉब्लम होती, तुम्हें किसी तरीके का कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होता या कोई डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन होता, अटेंशन खराब होता, तो तुम इस क्लास में जहां पे हो यहाँ होते ही नहीं. बिकॉज इनके सिम्टम्स बेसिकली क्लास 1 2 3 4 5 तक आते आते इतने ज्यादा वोकल हो जाते हैं कि उसकी हैंडलिंग एक्सटर्नल पर्सन को करनी ही पड़ती है. तो तुम ये कतई मत सोचो कि तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब है या मेमोरी खराब है. हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें एंजाइटी हो रही है, वो एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस को लेकर के होती है. और सबसे कॉमन जो एंजाइटी एग्जामिनेशन इसमें होती है, उसका सबसे कॉमन फैक्टर और सबसे कॉमन चीज है फियर ऑफ फेल्योर.
बच्चा यदि कहता है स्लीप डिस्टर्बेंस, पेरेंट्स कह रहे हैं पूरी रात पढ़ रहा है। अब माँ बाप आजकल काफी खुश हो जाते हैं जिनका बच्चा रात को भोर में 4 बजे तक पढ़ रहा है, सवेरे 11 बजे तक सो रहा है, या भोर में 3 बजे तक पढ़ रहा है और फिर सवेरे 8 बजे उठ करके एग्जाम देने चला जा रहा है। सो आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स गेटिंग वेरी हैप्पी, मेरा बच्चा पूरी रात मेहनत करके पढ़ता है। साइको एजुकेट द पेरेंट्स, दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट फॉर द चाइल्ड। एंड ये लोग जो एक्सक्यूज देते हैं कि रात के समय इन्वायरमेंट बड़ा शांत रहता है, मेरा कंसंट्रेशन बनता है। देखिए, प्रॉब्लम इन्वायरमेंट शांत और कंसंट्रेशन की नहीं है, रात के समय डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं जो अर्ली मॉर्निंग भी रहते हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये जब एक्सप्लेन किया जाए कि बेटा आयुर्वेदिक साइकिल के हिसाब से इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ राइट रूटीन, इट मे एंड अप गिविंग यू अ पुअर इम्यूनिटी एंड हेल्थ। तो मे बी तुम यहाँ भोर में 4 बजे तक पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे और पता चला तुम्हें खुद का इलाज करने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है। सो दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू जनरली साइको एजुकेट पेरेंट्स एज वेल, कि वो ऐसे चीजों को बहुत री ना करें। बच्चे का यदि डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न है, या वो दिन भर में 6 बार नैप ले रहा है और मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी रूटीन में कहीं और कुछ चेंज नहीं है, दिस इज अ साइन ऑफ एंजाइटी, सो हैज टू बी एड्रेस्ड। कॉग्निटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स मतलब रेसिंग थॉट्स। आप उससे बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में तो जैसे थॉट्स की एकदम रेल पकड़ी हुई है, वो ऐसे धड़धड़ 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 धड़धड़, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद वो एकदम परेशान है, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद वैसे होगा, और वो इस तरीके के थॉट्स में कंटिन्यूअसली परेशान है और आपको कहीं से भी बहुत कोऑपरेटिव साउंड नहीं कर रहा है। तो हैज टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस, कि आपको उसके रेसिंग थॉट से समझ जाना चाहिए कि इसको एंजाइटी हो रही है। बिकॉज एंजाइटी इज समथिंग जो कि हमारे थॉट्स को बहुत रैपिड कर देती है, बहुत स्पीड अप कर देती है। माइंड ब्लैंक्स, बच्चा यदि ये कह रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैंक हूं, क्वेश्चन पेपर देखते ही मुझे लग रहा है कि पढ़ा तो मैंने सब था लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूं, कुछ नहीं। उसको सिंपली बोलिए जस्ट वेट, थोड़ा सा पॉज लो, take a short break of 2 minutes. Just take a couple of deep breath. Let your brain get oxygen and let it function well and just relax. जहां आपने ऐसा अप्रोच किया, धीरे 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 जो भी माइंड ब्लैंक्स हैं वो धीरे 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 अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, यदि उसका ऐसा कहना है कि मुझे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो इन चीजों का मतलब भी जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉग्निटिव सिम्टम ऑफ एंजाइटी है। पुअर डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग इज समथिंग which gets affected at any age and it depends, every time the situation is different, so of course the decision making thing will also be very different. But this poor decision making something where if a person is in a persistent anxiety, it may lead towards poor, impaired decision making, because the person himself or herself will find a lot of difficulties in terms of taking a decision. What are the social symptoms? So communication difficulties. Any child who has some symptoms of examination anxiety will find some communication difficulties like expressing उसके मन में क्या चल रहा है, दूसरों को अपनी बात बताना। तो जब भी कोई बच्चा आपको कुछ बताना चाह रहा है और वो बता नहीं पा रहा है, आपको लग रहा है कि सर ये बता नहीं रहा है, देखिए बोल नहीं रहा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कितना बदतमीज है, बताइए इसको समझ नहीं आ रहा है, इसका एग्जाम है और ये है, आप ऐसी चीजें कह करके उसको सिर्फ पैनिक करेंगे और उसको और टेंस्ड कर देंगे। यदि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इट इज अ वेरी क्लियर साइन ऑफ एंजाइटी that the child is not finding appropriate word to express what emotional state the person is going through. Next is social withdrawal.
यदि पेरेंट्स ये कह रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है कि सोशल एक्टिविटीज, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, अब इन सब चीजों से एकाएक अलूफ हो गया है, so this is also जहां पे anxiety can lead towards isolation or withdrawal from social activities. Also, the third is irritability with peers, like इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब हम फ्रेंड से बात करते हैं, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तुमने कहाँ तक पढ़ाई की। अब देखिए आजकल बच्चे स्मार्ट हैं, सो व्हाट दे डू, दे मेनी ऑफ देम यूजेस दिस थ्री इडियट्स वाला स्टाइल, दे विल डिस्ट्रैक्ट यू एंड दे विल फाइंड देमसेल्व्स हैप्पी दैट बढ़िया, इसको तो मैंने परेशान, अरे मैं तो 6 चैप्टर्स में से 5.5 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया हूँ, now you complete your this thing. And this child who is has completed only 1.5 will end up comparing with this cognitive thought in his mind or in her mind, oh my god, my friend is way smarter, I have not done anything, look at myself, मैं कितना बेकार हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने अच्छे से किया ही नहीं. So these kind of symptoms are social symptoms of anxiety, where this can lead towards a different sort of cognitive distortion, where the child will think whether about everything or about nothing, and will end up with this thing that I am good for nothing, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता. So this is something to be understand. What are the environmental factors? क्या reasons होते हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन एग्जामिनेशन एंजाइटी या एंजाइटी फॉर्म को फेस करने का बच्चों के है लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन. सो जब प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होती है तो एक मन के अंदर फियर होता है, क्योंकि ये बात टीचर कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं, पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर बेकार हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा. तो रेट ऑफ थॉट ऑफ एंजाइटी इज समवेयर गेटिंग गवर्न्ड बाय दिस थिंग. दूसरा, हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस. कभी कभी मैं यदि बोलूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, आई हैव सीन पेरेंट्स बिकमिंग टू पैनिक डे बाय डे फॉर द मार्क्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. नहीं बेटा, 80-85% तो कुछ है ही नहीं, 95-96 के नीचे आया तो अब तो तुम्हारा कुछ लाइफ ही नहीं है, चीजें बेकार हैं. एंड यू वोंट बिलीव, मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था एंड दैट लेडी सेड इन फ्रंट ऑफ मी, उनका बच्चा 25 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30 पाता था. उन्होंने कहा कि सर, ये जब 30 आउट ऑफ 30 पाता ही नहीं है तो मुझे इसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा. इससे तो अच्छा है कि हम इसको किसी ऐसे स्कूल में डाल दें जहां पे इसके लेवल के बच्चे हों. नाउ आई हैड टू स्पीक टू दैट लेडी दैट मैम, आपके बच्चे को काउंसलिंग की नहीं, मुझे लगता है आपको पहले मुझे काउंसिल करना है, बिकॉज एकेडमिक एफर्ट्स का जो रिजल्ट होता है वो उसका स्कोर है, ना कि वो कैसा पर्सन है. किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसका रिजल्ट सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो एकेडमिक कितना एफर्ट किया है, बट वो अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन है ये उसके इंडिविजुअल ट्रेड्स पे डिपेंड करता है. इट डज नॉट वेरीज, इट डज नॉट रिलाइज ऑन द पर्सन's academic grades. So this is something to be understood. Number 3 is pressure from parents or teachers. Sometimes indirectly हम एज अ टीचर कहते हैं, अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छा करते हो, हमें तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं. अब जब हमने ये कह दिया तो बच्चा अपने आप को महान समझने लगा. अब प्रॉब्लम ये है कि जब उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो टीचर के पास पूछने में हेजिटेट करेगा, अरे मुझे इतनी सिली सी चीज नहीं आती. तो एज अ टीचर ऑलवेज अवॉइड टू मच ऑफ एप्रिसिएशन व्हिच क्रिएट्स अ burden over the child, because that is of course going to hurt the child. Parents have also some sort of uh, I'll say some sort of repetitive uh, sort of things over the child when they compare, मामा का बेटा ऐसा है, उनका बेटा वैसा है, उनका बच्चा वैसा है, उनकी बेटी ऐसा कर गई, तुम्हें पता है उसका वहां सिलेक्शन हो गया, तुम्हें पता है. इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ इरिटेटिंग फीलिंग्स टुवर्ड्स द पेरेंट. आप एक माता पिता के रूप में प्यार बहुत कर रहे हैं, बट जब आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो इट विल एंड अप समथिंग, बिकॉज हो सकता है आप उसका सैलरी पैकेज देख करके खुश हो रहे हो सकता है आप उसका पोस्ट एंड रिस्पेक्ट देख करके खुश हो रहे हो, बट आपका बच्चा आपके
पेरेंटिंग स्टाइल और इन सब चीजों का भी परिणाम है. सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल. फोर्थ इज फियर ऑफ जजमेंट और क्रिटिसिज्म. एंजाइटी के पीछे एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, मतलब बहुत कॉमन जो इन्वायरमेंटल रीजन फैक्टर हो सकता है, दैट इज फियर ऑफ जजमेंट और क्रिटिसिज्म. लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इस तरीके के रिपीटेटिव थॉट्स जब दिमाग में घूमते रहते हैं, तो द चाइल्ड फील्स इरिटेटेड, एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड. सो दिस इज समथिंग विच आर द रीजंस. नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑब्सेसिव फोकस ऑन ग्रेड्स. इतना नहीं आया तब तो जिंदगी बेकार है, इतना तो मुझे करना ही है, इस चीज को तो मुझे पाना ही पाना है. नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी बात को बहुत टाल मटोल करना, आप करेंगे तब करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा कर लेंगे, खूब सारी प्लानिंग करना बट कोई काम ना करना. अवॉइडेंस ऑफ स्टडी ग्रुप्स. कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने को अवॉइड करना. चार लोग मुझे बैठ के कुछ सब्जेक्ट समझाएंगे, इट इज नॉट नीडेड, एंड इस तरीके के थॉट्स उसको एंड अप कर देना. Now, what are the strategies you as an educator can use to reduce examination anxiety? Very first and a very, very, very important is encourage open communication. It is important to somewhere understand that यदि बच्चा आपसे जो वो फील कर रहा है एग्जैक्टली उसको शेयर करने में डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, is not very comfortable, so this will lead towards a lot of issues. And when we do not give a space to communicate well, believe me, there are high chances that the child will end up thinking with this, that my problem is a very silly problem, nobody is ready to understand. Remember this thing, हम में से वो लोग जो मैथ्स टीचर हैं, उसमें से हमारे लिए कभी इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज रही होगी. जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनके लिए मैथ्स कभी बहुत टफ सब्जेक्ट रहा होगा. सो रिमेंबर दिस थिंग जो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं इन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट जरूरी नहीं है कि हर इंसान किसी एक चीज में अच्छा हो, हर इंसान किसी ना किसी चीज में अच्छा जरूर होता है. So this is something which we have to keep in mind to encourage open communication with children. Number two, somewhere teach stress management techniques. What could be it? So very simple, deep breathing. हमारी ब्रीदिंग का हमारे थॉट रेट से डायरेक्ट कनेक्शन है. जब आप पैनिक होते हैं, जब आप घबराते हैं, जब आपके दिमाग में रिपीटेटिव थॉट्स चलते हैं, उस दौरान आपकी ब्रीदिंग रेट पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है. जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आप बहुत टेंस्ड होते हैं, आपकी ब्रीदिंग रेट रैपिड या स्लो होती है. तो कहीं ना कहीं हमको डीप ब्रीदिंग बताने की जरूरत है. उसके स्टेप बहुत सिंपल है. आप बच्चे को सिर्फ इतना कहिए कि जस्ट try to take a complete breath inside, hold it for a couple of seconds, release it outside, stay without breath for couple of seconds. That's it. सांस लो, थोड़े क्षण रोको, सांस बाहर करो, थोड़े क्षण बिना सांस के रहो, फिर वापस से सांस लो. इस प्रोसेस में ही डीप ब्रीदिंग से बहुत हाई लेवल तक का इमोशनल डिस्कम्फर्ट जो है वो रिलीज हो जाता है. नंबर टू, माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको सिर्फ इतना बताना है कि हमारे नॉस्ट्रल रीजन से सांस कैसे अंदर जा रही है और सांस कैसे बाहर आ रही है. सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो, whether it is going from the left nostril or the right nostril or both the nostrils, slow, fast, doesn't matter. Just be very vigilant, alert, and just observe. Third is प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. सो आप बारी बारी उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बता सकते हैं, जैसे कि आंख एक बार अंदर की ओर बंद करो, सांस भरो, फिर सांस छोड़ने के साथ आंख को ढीला करो, अपनी मुट्ठी बंद करो सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए. ऐसे करके आप सारे बॉडी पार्ट को उसके रिलैक्स करा सकते हैं.
ये टेक्निक से थोड़ा सा वो काम डाउन होते हैं, और जब कोई काम डाउन होता है तभी उसकी थिंकिंग और उसकी प्रोसेस और उसका दिमाग काम करता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पैनिक है, परेशान है, तो आप उसको कितना भी काउंसिल कर लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, उसका कोई बहुत खासा असर उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत रेस्टलेस है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन लर्निंग एनवायरमेंट। कहीं ना कहीं आपका शब्दों का चयन किसी भी बच्चे के लिए, आपका उद्देश्य क्या है, यह आपके शब्दों में कभी भी नहीं होता। आप बच्चे को जिन शब्दों से बोल रहे हैं, वट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर अ चाइल्ड, and you are trying to speak to the child, whatever things you are saying to the child, your those words, selection of those words matters a lot. What intention you hold behind is nowhere visible into that thing. So it is very important to somewhere develop a supportive classroom atmosphere where the child can exactly feel safe and can feel trusted, valued, understood, believed in, cared about, supported. So, this is something which is very important. Encourage a growth mindset. It is not important that every child will top in the class. It is not practically possible as well. So, try to give a lot of opportunities to children and just tell them, I I just want to say that you all give your best, you all try to do your best. It may happen that somebody will be scoring high in math, somebody will be scoring high in music, somebody will be scoring high in drawing, and somebody may be scoring high in their English this thing, or in any particular this thing. But you are all different, but you are all able. Your academic grades are just a representative of your academic efforts. Of course, anything which you will do in your life which is related to which has something to do with academics, these grade will matter. So if you really want to do something on the basis of your academics, you need to do hard work and you need to get good grades. But if you think that you want to become someone who doesn't need a academic grade card something, then don't worry, carry on with the things. So you have to somewhere help children to develop thoughts and belief for their better understanding. Classroom techniques, what can you do for that inside the classroom? A very first and a very simple thing is, first start with break down task into smaller goals. किसी को आप एक साथ पूरा चैप्टर दे देंगे और कहेंगे पूरा कर डालो, बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। किसी एक चैप्टर को क्लास के 6 अलग अलग ग्रुप्स में, 6 6 बच्चों के 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। Those kids will do it and they will be very happy to do in front of everyone. More manageable goal to reduce overwhelm. Sometimes it is very overwhelming, so it is to be used. So break down heavy task into smaller goals. Number 2, implement relaxation technique, which I already told you. Deep breathing, mindfulness, progressive relaxation. These videos are available on YouTube. If you really want to learn any of the relaxation exercise, just put it on YouTube. You will get a lot, and a 5 minute, 2 minute, this thing can help you to help children. But always try to always try to use anything inside the classroom for relaxation. If you are using, is to be used step by step. Do not worried, do not exaggerate something into too much of this thing. Also, try to promote effective time management. Somewhere students, they study hard, they do a lot of things, but many a times if I'm not able to do something in the given time, I may lose my interest. There are a very handful of people who will be taking it as a challenge, that they will be not going to repeat it, the mistake which they have did this time. They are going to be more good and effortful in the next time.
that is okay, but those handful people will not make the and change the complete system. So it is important to be promoting effective time management thing, building resilience. So how we can talk about resilience this thing? So resilience is something which talks about helping someone to navigate challenges and enabling a student to become emotionally aware and developing a ability to bounce back in an adverse situation. So resilience के लिए you can use affirmations, you can use a lot of uh, good talk time sort of like thing which can build resilience in students. Because if a child participated in any of the activity and could not perform well, if you will say that I trust you, this time this may not happen, but prepare better for the next time, I want to see you doing well, the child will develop a resilience attitude and will do. You just have to keep talking, you just have to keep motivating so that the child can develop a better psychology, a better positive self talk about themselves. Because for children, the words which are used by the teachers, by their parents, or by anyone, it really matters. Positive learning environment. So a positive and inclusive classroom learning environment, it has a very significant impact on students' resilience. So we'll discuss about the importance of fostering an environment in the slide here. What is the impact of a positive and inclusive classroom environment on students' resilience? So the very simple thing. When we talk about positive learning environment, before I talk about positive learning environment, let me talk about inclusive classroom environment. Inclusive classroom environment means whosoever is good at whatever things, we have a shared goal. We all have to do, all have to put our efforts for the same, and we all will do better into that particular domain with full possible possibilities. What is positive learning environment? Where everybody will get a chance to get involved into the things, where everybody will get a chance to be better than before. The environment is supportive, respectful, values the views of the people. So this is something which will develop resilience in students. Teach problem solving skills. So, even to get rid of examination anxiety, if a child is not performing well or is facing some issues or something like that, just speak to the child regarding problem solving skills and try to empower students to navigate challenges. So, what you can do, you can develop problem solving skills to empower students. Somewhere you have to focus on that how they have to learn from their mistakes. Galtiyan ki, it's okay. What did you learn from this mistake? What is your like not to do again behavior? What is your next what is your next like decision to move towards something? So these things will help to develop a better understanding towards the problem solving skills. And this thing will somewhere it will help the children to develop a better understanding about themselves. Because nowadays children come with problem, but how to teach like how to teach problem solving to children, that becomes a huge concern. So somewhere you need to really understand that first you tell them that you have to identify the problem, uh, help them understand the issue at hand, also ask them to think creatively, like encourage brainstorming for possible solutions, evaluate options, like if they have something in their mind, just discuss the pros and cons to develop analytical skills, make decisions, teach them to choose the most suitable solution, what is most suitable to their situation. Also implement solutions like
guide them, just try to guide them through putting their chosen solution into action. Reflect on results, just discuss the outcomes and try to encourage learning from experiences, and just repeat the process, like practice regularly to reinforce problem solving skills. So if it is used inside the classroom, of course it is going to help students in that thing. What is the value of mistakes in building resilience in students? So if I really talk about thing, so the very first thing, mistakes play a very crucial role in building resilience in students because it fosters learning. Like mistake, it provides opportunities for valuable learning experiences. Also, there are so many things, like it develop perseverance, it boosts confidence, it encourage adaptability. So let me go one by one. So if you make a mistake, what is the value of it? The very first is it foster learning. What is the next thing which you get after? What is the next value of mistake? Is develop perseverance, like overcoming errors cultivates resilience and persistence. How does it boost confidence? So successfully navigating challenges, it builds self-esteem. So it also encourage adaptability. If you make a mistake teach students to adapt and find alternative solutions. In making mistakes, another thing which is there is like it builds problem solving skills. So learning from errors, it enhances critical thinking as well as problem solving abilities. So when this is done, what exactly happens? So mistake also promote emotional regulation, like facing and learning from mistakes help regulate emotions in the challenging situations. So overall, making mistakes as a part of learning process, it contributes significantly to a student's resilience and growth mindset. So that is important. uh, how can we collaborate with parents to develop resilience of children? So the very first is provide resources. Provide resources for parents to support their children. So what can you do? Very first is communication. And I always talk about good communication, open communication between educator and parents, because without that there's nothing possible. So regularly communicate with parents to share insights on a child's strengths and areas for growth. Also, parenting workshops can help. You can invite any psychologist, any counselor to just speak to the parents on sensitive topics like examination anxiety, what could happen, what may have been done, and something like that. uh, Encourage positive reinforcement, like support parents in like reinforcing positive behavior and acknowledging the child's effort. You can share resources, like provide resources on resilience building activities and literature to parents to use at home. And two more thing which I feel is important here to be added in this thing is set consistent expectations, like align pay expectations between school and home to create a consistent and supportive environment is important. Parallelly, in communication, promote open dialogue, like encourage parents, to discuss challenges with their children and help them find solutions together. So, by establishing a collaborative partnership, I feel like schools and parents can work together to create an environment that nurtures, resilience in children. So, this is something to be taken care of while speaking to the parents. Professional help, if you find really a child is going through some emotional sufferings,
has some emotional problem, doing some emotional uh, things, and it may be self harm, it may be bullying, it may be something which is somewhere affecting the child. Refer the child for counseling. Ask the parents to feel free to go to a counselor. Tell them that the counseling is always for helping people, counseling is always for supporting people, counseling is always for motivating them, counseling is not for mentally unhealthy people. Counseling is always for mentally healthy people, because a healthy person can only find conflict and issues. A mentally unhealthy person has some disorder and all. So that is something where you have to understand and you have to suggest to parents. So, in conclusion, what I would like to add is, you try to encourage ongoing support for students. Somewhere it is important that you have to continue support awareness in addressing examination anxiety. And uh, like the main takeaways are, there are so many symptoms of examination anxiety, there are so many symptoms of multiple things there. Just feel free just feel free as and when you find something happening there, something which is bothering you, something which is bothering to the child, it is important to talk about it. So I open the if there is a question, I open it for all. Anyone who has any questions, any doubt, the session is open for Q&A, so you can put your questions there, and I'll try to answer the questions. If you have any questions, anyone, please feel free to put your questions in the chat box. Any question, anyone? If you have any question, any doubt, any question? Yeah, somebody has written chest burning feeling. Chest burning feeling is also a very common sign of anxiety. So you can understand that that is also there. Any other question? Yes. Thank you for all the positive comments in the chat box. Uh, yes. I okay. Yes, there is one question. A student is suffering from examophobia. How can I counsel her? So, first of all, like there are so many things, but as I have already said, that ask the like try to identify the specific, uh, worries of the child. Try to ask the child that if the child has any issues, any concern, let the child address it to you, let it get discussed with you, and that's it. If you discuss that, ask the child to set realistic goals, because children who have examophobia, something like that, it is something they have not very realistic goals. So they somewhere find issues in terms of managing and balancing their things. Also, ask them to prioritize their studies properly, and ask them to revise as good as they can. If they will do good in terms of revision and all, no doubt there are high chances that they will improvise and they will like do well in this thing. Any other question? Thank you so much.
Any other question? Yeah. No question. So thank you. Thank you so much. Thank you so much for all the comments, and thank you so much. I just end up my discussion here. Thank you and Jai Hind. And please keep helping students. They really need their concerned teachers. Thank you so much.